Paper-B marathon. I have shared one link in the chat box. You all can see. Quickly, just one second, one second. अच्छा, one second, guys. ये वाला मैं आप लोग को इसमें now you all can click on this link. Yeah, now it's accessible. You all can click on this link which I have shared in the chat box. This has the question paper and the required documents that you will be needing, files. It's a zip folder, so see, this is the file. Just download this file. Okay. Just unzip it. Okay. So these are the files that we will be using. I have tried to cover. I have tried to cover as many good questions as possible. I've taken GLM, EBCT, regression, hypothesis. Okay, so I've tried to cover as many topics as possible, and we will try to finish all of these today. ठीक है, सबका खुल गया? Can we start now? Anyone wants to ask anything? किसी ने hand raise करा था अभी. हाँ जैस्मिन बोलो. Ma'am, I want to ask one question. Like, can we load the any kind of library in the R programming? In CS1A you don't need. मतलब CS1B you don't need. Okay. ठीक है. Okay. So let's start. Are you all able to see my screen? Everything is set. Chalo, let's do with the first question. Let's read this. A researcher has collected the following data on a group of students regarding whether they passed or failed. Okay. The data can be entered into R using this following code, even though if they will not give you this particular code offline, I hope you can, create this matrix. It's not difficult. The researcher wants to establish whether the tutorial attendance is independent of exam success using a chi-square test. So they want to, this is the contingency table. They want to check whether the attending tutorials and passing the exams are independent or dependent on each other. State the hypothesis of this test. So this is again a comment like a question. So आप इस पे कैसे करोगे बताना? क्या लिखोगे? It's not that they both are independent of each other, and H1 that they are not independent, that is dependent. Correct. So null hypothesis is that the tutorial attendance and exam success are independent of each other. Alternative hypothesis H1 that they are not independent of each other. Properly आप दोनों sentence को लिखोगे. Right? I'm not writing it. आप लोग को ये करना है तो आप लोग quickly ये करो.
Quickly just write it down. ठीक है, पार्ट 1 आप लोगों को करना है। Calculate the expected frequencies for the data under null hypothesis in part 1. Calculate the expected frequencies. Expected frequencies कैसे निकालेंगे? Anyone? In today's class, I will be randomly picking you all. अगर आप लोग कोई एक भी जन रिप्लाई नहीं कर रहे हो, I will randomly pick you up. Tell me. Row total into column total divided by table total. Row total divided multiplied by column total divided by the entire total, right? तो इसको निकालें कैसे? सबसे first thing is what we can do is we can take this code. Copy this. इसको पूरे को आप कॉपी कर लो, ये मेरे में कॉपी नहीं हो रहा, आई एम यूजिंग समवन एल्सेस लैपटॉप। कोई बात नहीं, आई विल टाइप इट डाउन। एग्जाम, इसको आप लोग प्लीज ले लो। इसमें मैम ये क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेगा? एक बार चेक करो, मैंने चैट बॉक्स में भेजा है, चेक करो। ओके मैम, गॉट इट। क्या क्या थे? 132, 120, 27, 51। बोलो, तो ये हम लोग निकालेंगे कैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज? डायरेक्टली तुमने जो फॉर्मूला बताया इज फाइन, बट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्या? हमने डायरेक्टली निकालना भी तो सीखा है। chi-square test. Yes, exactly. We can use the function chi-square test. So help tab में देखो, chi-square test function जो है हमारा, इसमें we have x y, ठीक है, हमारे पास x y नहीं, we have a matrix, so we can just directly have a matrix over here. You don't have to take anything else, you just get expected frequencies. And वो कैसे extract कर सकते हैं? If you see यहाँ पे expected है, which takes out the expected frequencies. So आप यहाँ पे लिख सकते हो running the chi-square test and extracting expected frequencies. तो ये हो जाएगा हमारा, just simply if you want you can put this in test chi-square test एंड इसके अंदर हम डाल देंगे एग्जाम डॉट सक्सेस। इसको रन करेंगे, टेस्ट डॉलर जस्ट एक्सट्रैक्ट एक्सपेक्टेड। देख लो, ये हमारे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गए। यस समीक्षा। मैम एक जनरल डाउट था कि अगर हमें कंटिन्यू करेक्शन कहीं भी मेंशन्ड है कि नहीं, तो फिर उसमें यूजुअली हम नहीं लेते हैं ना कंटिन्यू करेक्शन। अगर कंटिन्यूटी करेक्शन मेंशन्ड नहीं है, फिर से यस बोलो। मैम। मैम क्वेश्चन में कहीं भी कंटिन्यूटी करेक्शन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हम जनरली उसे नहीं लेंगे ना? नहीं नहीं, यूजली नहीं लेते हैं। समटाइम्स दे मेंशन टू डू कंटिन्यूटी करेक्शन, तब आपको करेक्ट इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ता है, बट अदरवाइज जनरली वी डोंट। यहाँ पे इफ यू सी कंटिन्यूटी करेक्शन बाय डिफॉल्ट दे हैव सेट एज ट्रू। तो
what we can do is, we know contingency table में we don't do continuity correction, तो यहाँ पे हम इसको false कर सकते हैं, ठीक है, and we can run the test. But even though if you're not making it false, यहाँ पे in this case आपका marks deduct नहीं होगा. अगर क्वेश्चन में कुछ वैसा मेंशन्ड है तो ही होता है, अदरवाइज नहीं. बट हाँ, बहुत ही अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी करेक्शन इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, दे माइट डिडक्ट 1 mark, बट यहाँ पे दे विल नॉट. Ideally we should not do continuity correction यहाँ पे. So ideally when we run the chi-square test, we will anyways continuity correction will not impact your expected frequencies. तो यहाँ जब आप कर रहे हो तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, करेक्ट इक्वल्स हम फॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी करेक्शन इज नॉट नीडेड. तो इसको आप बिना कंटिन्यूटी करेक्शन के कर सकते हो. बट इवन दो इफ यू आर नॉट डूइंग इट, दे विल नॉट डिडक्ट एनी मार्क्स. ठीक है. Okay, ma'am. Part 3 is perform the test clearly stating your conclusion. So we've performed the test. Now यहाँ पे you have to state the conclusion that is actually of 2 to 3 marks. You are doing this, you are pasting this, gives you 2 mark, 1 mark, 3 mark, whatever. But apart from that, if you see part 3 is 6 marks. तो 6 marks का आपका 3 marks इसका है और बाकी 3 marks आपका comment है. तो comment आपको बहुत अच्छे से लिखना है. So in this case, आप पहले तो ये लिखोगे, the p value for this test is coming as 0.6%. 0.6%, which is way less than 5%, क्योंकि कुछ बोला नहीं है. So there is sufficient evidence to reject the null hypothesis. अब यहाँ पे since they have not even mentioned about 5% की क्या, and 6 marks का है only for this much, so एक और additional effort आप डाल सकते हो. You can also say even at 1% level, significance level, the test will be rejected. And we conclude that the tutorial attendance and the exam success are not independent of each other, because we are rejecting the null hypothesis. It's dependent on each other. ठीक है. ये चीज पूरा अच्छे से सब लोग लिखेंगे कमेंट, because trust me, the only place where you can lose marks in, whether it's in CS1 or in any other paper, is the comment. जो आप एक लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो इसका 1 mark 2 mark है, आप लोग आउटपुट पेस्ट कर रहे हो कंसोल से, इसका 1 mark है, बट मेजरली इट्स ऑन द कमेंटिंग दैट यू हैव टू डू. इफ यू आर नॉट डूइंग इट नाइसली, आपका मार्क्स पूरा जाएगा उधर. कंप्लीट करो इसको. CS1 CB2 आज नहीं है. पढ़ने आई हो ना. हाँ हाँ हाँ, पढ़ लो. बंद कर दो पूरा, आवाज आता है. Next आ जाओ, those who have written. Let's move to the next part, next question.
चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Data were collected on average alcohol and cigarette consumption per adult per year for a number of countries. The data are given in the file smokingdata.r data and contain the following information. तो अगर आप देखो इसमें in the zip folder itself, I have given you this particular data. Now, since it's a zip folder, you have to unzip it. Otherwise, आप उसको extract नहीं कर सकते हो. What's the shortcut जो मैंने सिखाया है? Control Shift C. Control Shift C करने से just click on this and do Control Shift C. Control Shift C करने से your file path gets copied. ठीक है? It has country. It has alcohol consumption per adult per year. It has number of cigarettes consumed per adult per year. Construct a scatter plot of the data with alcohol consumption on the x-axis. So on the x-axis, you need the alcohol consumption and you need to create a scatter plot for that. सबसे पहले तो let's get the R data. Now how to get the R data file? Can anyone tell me what's the... I'm creating a new script. You have to do same thing in your exam. If you have 5 questions, please make sure you create 5 different scripts. Why? It's not important, but why? It's not necessary. But why I'm doing this? Maybe अगर मैंने इस part में कुछ गलत किया होता, या let's suppose I have to revisit question 1 का part 2, तो वो मैं कैसे करूँगी? तो इससे क्या होता है ना कि आई कैन जस्ट नो, अच्छा इसमें आई हैव डन दैट एंड आई कैन. अब एक ही स्क्रिप्ट में अगर आप कंटिन्यूअसली लिखते जा रहे हो, सो व्हाट हैपेंस इज दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रेफर बैक टू द क्वेश्चन, टू द पर्टिकुलर पार्ट, राइट? तो यहाँ पे आ जाओ. लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. सबसे पहले क्विकली टेल मी, अनम्यूट एंड टेल मी हाउ टू कॉपी, हाउ टू इम्पोर्ट. One more thing you can do is you can remove the console from here. Why I'm doing this? Because जब आपने पूरा answer 2 कर लिया, you can just select the entire console, copy and paste it. Otherwise again आपको देखना पड़ेगा कि answer 2 कहाँ से start हो रहा है, वहां से आपको copy करना होगा. पूरा console हटा देंगे तो you can just, you know, and script है तो you can run and get your answers anytime. Quickly, how to import an R data file? What is the function that we use? read dot table. read dot table नहीं करते हैं. मैंने सिखाया है आप लोगों को आर डेटा एंड हमने वीडियो भी डाला है आर डेटा फाइल कैसे करते हैं. बोलो बोलो, आई एम वेटिंग. Can we use the load function? Yes, we have to use the load function only. इसमें इतना सोचने का था ही नहीं. And just paste. अच्छा मैंने ये कॉपी कर लिया. Just go back to the file. Control Shift C करने से आपका फाइल पाथ कॉपी हो जाता है. Just paste it here. See, your file path is copied. कुछ भी नहीं करना, सब कुछ अपने आप आ रहा है, quotes and all. Just that you need to add these slashes because R does not consider forward slash, it only considers backward slash or double forward slashes. Once you have done this, see you have this test, it's a list of 9. You have alcohol, cigarettes and country. You have these 3 variables that are needed. अगर आपको चेक करना है आप ऐसे रन करके देख सकते हो. अल्कोहल से आपके अल्कोहल के वैल्यूज आ गए. ठीक है. नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पार्ट ए. बताओ कौन सा फंक्शन यूज करेंगे टू मेक द स्कैटर प्लॉट? plot function. So you will just simply write plot. X axis पे आपको करना है alcohol,
और वाई एक्सिस पे किसको करेंगे? बोलो, किसको कंपेयर कर रहे हो आप? अल्कोहल अगर एक्स एक्सिस में बोल दिया तो वाई एक्सिस विल बी सिगरेट्स, है ना? Cigarettes. I am not giving the title. You all need to give a nice title. Title should be, it can be what? Alcohol versus cigarettes. ठीक है? X versus Y होता है alcohol versus cigarettes. Also, you need to give nice X axis. खाली alcohol मत लिख के आना. It should be alcohol per adult per year. या फिर alcohol per adult and bracket में liters per year. Y axis Y lab cigarettes per adult per year. ठीक है? Make sure you give nicely. I'm not doing it. See, आपका एग्जाम है. In our classes, we have done everything from scratch. I've written the title, I've written the x-axis, y-axis. Now it's your chance that now you have to, do this. Ma'am, I'm unable to copy the file path. See what you have to do, Kaivan, is that आप इस पे जाओ. Again, if it's in the zip folder, आप नहीं कर सकते हो. आपको unzip करना होगा. मैंने शुरू में ही देख लो यहाँ पे unzip कर लिया था. I have already unzipped the file. तो यहाँ पे आपको जाना है, स्मोकिंग डेटा पे क्लिक करना है जस्ट वन टाइम. कंट्रोल शिफ्ट सी करने से यू कॉपी द फाइल पाथ. ऑलराइट, just run this and you have your, I have not given you the titles and all that, but आप लोग को देना है. I can just maybe write alcohol just for understanding purposes. And ठीक है, ये हो गया. अनदर थिंग, इफ यू वांट टू डू, आपको अगर ये जो स्कैटर प्लॉट में पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर इफ यू वांट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, you can always have a PCH of 19 or 20. It gives you nice dotted वाला, ठीक है, effect. See, this is the plot. All right. Now one more thing is that you need to copy the plot as well. So copy कैसे करते हैं plot को? Click on export, click on copy to clipboard. ये आ गया and then click on copy. Go to Word and paste it. ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है? वन पार्ट ए जब आप लोग यहाँ से कॉपी कर रहे हो, उसके नीचे में ही make sure you paste this. Since now, see what has happened. I will not repeat these small things again. What has happened, I've run the plot function twice. So what happens is when I copy from console, तो वो दो बार आ जाएगा. So it's always better first complete the question entirely, remove the console, then run the entire script again. तो वो सारा codes आपका सही आता है. You will not get any error or warning also in between. Any other question? ठीक है. Next part is comment on the relationship between the data on alcohol and cigarette consumption based on your plot. So again, a commenting question. This commenting wala part will be of 3 marks. Plot will be 2 marks. This is of 3 marks, total 5 marks.
बताओ क्या कमेंट करोगे? So you can write, first of all, what do you understand by seeing the plot? So it's clearly seen that they have a positive relationship, but this positive relation is not very strong. It's like average, moderate positive relation between the alcohol consumption per year and the cigarette consumption per year. So that is one thing. Second, you can say that also it's जो आप बोल रहे हो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लीनियर है, ठीक है? So you can see it seems a linear relationship seems to be there. There are two outliers बोल सकते हैं इसको, है ना? There are 2 points which are suggesting very less alcohol and very high cigarette, and this one is very high cigarette and average alcohol consumption. ठीक है? So 2 exceptions or 2 points which are acting as outliers, but otherwise if you consider the other points, it can be a linear relationship. Positive linear relationship. So first you talk about the positive relationship being moderate, not very strong. Second, then you talk about the shape, which is linear, and you can also talk about the outliers. And these are all individually countries. So there are 2 countries that indicate that average high alcohol consumption relative to high average cigarette consumption. ये cigarette इसका बहुत high है. Compared to alcohol consumption, the relationship is slightly different compared to other points. Okay, 3 marks, 3 points you have to write. करो. टाइप इट डाउन. मैराथन क्लास है, कोई ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, सबका एग्जाम है अभी, तो आपको थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा. Next part, calculate Pearson's correlation coefficient between data on alcohol and cigarette consumption. So Pearson's correlation regression बोला है, कौन सा फंक्शन? COR. हाँ, COR कोर, वेरी गुड. ठीक है, इसमें हम डालेंगे अल्कोहल, cigarettes. By default method I think Pearson ही रहता है, just let me check. By default it's Pearson, you don't have to write, but if you want to you can. ठीक है, run this and then you get your answer. 0.4852. आपको पूरा अच्छे से लिखना है. The answer is, या Pearson's correlation coefficient is this. An analyst suggests using the following R code to modify the data. So you have this data. Now, just by looking at the code, can anyone explain what they are trying to do? Probably removing the 2 extreme values. Yes, so they are removing the two, maybe they are removing these 2 outliers which are there. है ना? These 2 outliers which are there, which is maybe point number 6 and 16. ठीक है? So explain, अच्छा, okay, the question is only asking you, explain the above code, what does the above code does, and give a justification for its use. So you can say the code removes
from the data the 16th and the 6th and the 16th data points from the matrix or from the data. Now, why? Because these two data or the data points are corresponding to the two countries, which shows large deviations from the overall linear pattern as seen in the scatter plot above. Okay, these points are acting as outliers and hence are being removed. You can also say कि कौन सा exactly ये दोनों points है. Can anyone tell me how we can find out exactly countries जिनको ये represent करता हो? कैसे निकालेंगे? Country and bracket में 6, Greece and United States. These are the two countries. And if you also want the data on alcohol, तो ये alcohol है, ये cigarettes है corresponding. ठीक है, quickly type कर दो. If you write this also, na, like if you give the countries that you're removing Greece and United States. Part 4. For the remainder of the question, use the modified data as produced by applying the R code above. So you can take these 2 points. ठीक है, दोनों हमने बना लिया है. Part 4 is construct a scatter plot with the alcohol consumption on x-axis. Calculate Pearson's correlation coefficient between the new data. Comment on the parts 2 and 4b. तो same चीज करना है. Let's do one thing. Let's go above. Take this. Paste. इधर पे खाली change कर दो 0.2. 0.2. ये आपका हो गया, दोनों हटके देख लो. You can also calculate this. इंक्रीज हो रहा है, देखो. आई थिंक पहले 0.4 था ना, 0.485 था, अभी 0.861. ठीक है. Make sure you give the
title nicely. In this case, your title will not be the same anymore. You can change it. You can write alcohol versus cigarettes, and in bracket you can write Greece and USA omitted. ठीक है? Because otherwise both the graphs looks, मतलब अगर आपका title same है तो what is the difference? What has changed between the two graphs? So in order to you know talk about that, आपको clearly mention करना है Greece and USA omitted. इसको R, अब मैंने R डाल दिया ना तो पहले वाला R रिप्लेस हो गया हमारा, तो करेक्ट तरीका होता है इसको हम R1 कर देते हैं. ठीक है, कमेंट क्या दोगे बताओ. Anyone unmute and tell me comment. When the two variables are showing a linear relationship, you correlation. The word correlation basically means that you are trying to see the linear relationship between the two variables. Right? That is what you mean by correlation. So over here, our correlation is increasing. So we can say since we are removing the two data from our entire data set, which were causing large deviations from the linear association. So now we can say the remaining observations which are there have a stronger linear pattern, a stronger linear relationship between alcohol and cigarettes, and that is why the correlation, which again signifies the linear relationship between the two variables, is increasing. ठीक है, यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करो एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सब लोग अच्छे से लिखेंगे. It's your exam. Even though if I'm not able to see you what you are doing, at least you should be honest with yourself. ठीक है, करो, then we'll move to the fifth part. Everyone will write the comment nice.
हुआ सबका? नेक्स्ट करें? कोई डाउट है? अगर आप लोग टाइपिंग करके नहीं लिख रहे हो तो प्लीज क्लास छोड़ दो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप लोग अगर कमेंट्स नहीं टाइप कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं आज की क्लास का। नेक्स्ट इज perform a hypothesis test for the null hypothesis that Pearson's population correlation coefficient is equal, and randomly I will ask any one of you to share your comment, ठीक है, in the chat box. Perform a hypothesis test for the null hypothesis that Pearson's population correlation coefficient is equal to 0 against the alternative that it is positive. You should report the p-value and a clear conclusion, 5 marks.
सो सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन सा फंक्शन यूज करेंगे. द प्रॉब्लम ओवर हियर इज यू नीड टू चेक, you need to see whether the correlation coefficient between these two variables is 0 or not. बताओ. Very good, Samiksha. Co.test is the function that we will be using. So, those who don't remember co.test, I don't think ऐसा कोई होगा जिसको याद नहीं होगा. It's a very easy function. Just type here co.test and x value, y value, which is alcohol 2, cigarettes 2, क्योंकि अभी नया डेटा हो गया. एंड मेथड में आपको पेयरसन रखना है. ऑल्टरनेटिव इज टू साइडेड और वन साइडेड. I'm one-sided. वन साइडेड कौन सा? ग्रेटर ना या फिर लेस? I'm greater. ग्रेटर बिकॉज यू वांट टू चेक वेदर इट्स पॉजिटिव और नॉट. तो आपके पास सारी चीजें भी हो गई, तो आप कर सकते हो को डॉट टेस्ट अल्कोहल 2, cigarettes 2, method is person, alternate alternative is greater. ठीक है. अब ये आ गया आपका. They've also mentioned कि आपको अलग से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, पी वैल्यू. सो यू कैन रन दिस टेस्ट. इसको आप किसी पे स्टोर कर सकते हो इफ यू वांट टू. एंड देन यू जस्ट हैव टू राइट $p.v. आई थिंक आ जाएगा. yes. p.v या p वैल्यू ऐसे करके आता है. आप इसको किसी पे डाल सकते हो टेस्ट में, एंड देन टेस्ट डॉलर करके यू विल सी कि वो क्या नाम है. So p value I have extracted. Now can anyone just unmute and comment on this? It's less than 5%, so we reject the null hypothesis, and it's so the correlation coefficient is greater than 0. So okay, p value is way less. It's almost 1 second. बाद में पूरा वो कर लेंगे. ओके. तो यस, तो आप लोग इसमें ये लिखोगे दैट द p वैल्यू इज 0.000037, है ना. तो इट्स लाइक वेरी स्मॉल. सो p वैल्यू इज इक्वल टू जो भी आपका आ रहा है वो लिख दो. नाउ इट्स वे लेस देन 5%, so it shows that there is a sufficient or a very strong evidence to reject the null hypothesis. We reject that Pearson's correlation coefficient is 0, है ना. That was the null hypothesis. You can also mention the null hypothesis clearly यहाँ पे, and then you can say that is, and so we can conclude that the Pearson's correlation coefficient is positive. ठीक है. That was, आप लोग यहाँ लिख सकते थे H0 R और Pearson correlation coefficient is 0, or H1 null alternative hypothesis it's greater than 0. ठीक है. Because it's of 5 marks, you have to write. You cannot get 5 marks for just one line of code, right? Complete करो इसको.
ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट में. The media bulletin has reported that higher alcohol consumption causes higher cigarette consumption. Comment on whether this report is justified based on your analysis in part 4 and 5. So it says higher alcohol consumption causes higher cigarette consumption. Comment on this. Can anyone comment? It's of 2 marks. So according to Pearson's correlation coefficient, we see that it's positive. So we can say higher the value of x, more the value of y, which is true. But हमने एक और चीज क्लास में समझा था कि correlation does not mean, what was the word जो मैंने समझाया था क्लास में? Correlation does not mean, बोलो. Causation. Very good. Correlation does not always means causation. What do you understand by causation? That if x is increasing, x is the reason, x is the cause for the increase in y as well. So correlation does not always means causation, and so here we can say that the report may not be completely accurate when it says that higher alcohol means higher cigarettes. ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए. आप लोग बोलोगे yes, it suggests a positive linear association between x and y. I'm using x and y, आप लोग को alcohol and cigarettes बोलना है, but वो causation वाला नहीं. Alright. टाइप करो सब लोग. पार्ट 7 क्या बोल रहा है देखो. Perform a simple linear regression analysis on the new data using model y equals to alpha plus beta. ये जो हमारा linear regression का line होता है. There the error terms independently follow a normal distribution. Your answer should show the fitted line plotted against the data scatter plot and report the estimate of the parameter alpha. Very easy, not difficult.
कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? LM function यूज करेंगे. Now model that we are creating, y on x होता है. So first we will write cigarettes. Actually it will be this one on alcohol. ठीक है, so we've created this model. You can run a summary of this. ठीक है. So now what are we यहाँ पे इन्होंने बनाने बोला. Okay. Now this is done. In this you have to extract what? You have to extract this intercept term. है ना? ये इन्होंने बोला था पूरा निकालने. तो कैसे निकालेंगे? You can just either do this dollar sign and आप निकाल सकते हो. आपको कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा. ये पूरा टेबल आएगा कोएफिशिएंट्स का. देखो कोएफ टेबल आ गया. एंड देन इन दिस यू कैन put this matrix 1,1. तो ये आपका एस्टिमेट आ गया. आइदर यू कैन डू दिस और यू कैन जस्ट सिंपली राइट that from the R code above we see that the estimate of alpha parameter alpha is equal to alpha hat is equal to minus 0.298 जो भी है. इन्होंने अल्फा नहीं बोला है क्या? सिग्मा बोला है. सिग्मा बोला है, नॉट अल्फा. तो सिग्मा कौन सा वाला होगा? सिग्मा बताना. ये होगा ना रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर, राइट? So you can say that from the R code above the sigma hat is given by 0.6288. Done. Now they are also asking you कि आपका जो ये scatter plot है इसके ऊपर they want you to insert. तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करके इंसर्ट करते हैं? Line. ओनली लाइन. क्या लिखेंगे बताओ? लाइन क्या? लाइन में तो यू हैव टू गिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. मतलब what you can do is in line function also if you want you can write alcohol 2 on the y axis you have to plot the fitted values. है ना? तो some model dollar fitted values
बनेगा कैसे? देख लो. Let's again make this. LTY लाइन फंक्शन यूज करेंगे कि कोई और फंक्शन? आप लोगों ने सीखा है ना. We will use AB line and directly just write model. एक सेकेंड. AB line होगा, ये मैंने लाइन लिख दिया. And just directly use model. आ गया आपका? क्या डाउट हुआ इसमें बताना. क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें? Yes, tell me. मैम हम लाइंस फंक्शन यूज करके भी कर सकते हैं क्या? हाँ, लाइंस कर सकते हो. मतलब वो गलत तो नहीं होगा ना अगर हम लाइंस करके करेंगे तो? गलत नहीं होगा. ओके मैम. गलत नहीं होगा. रुको, वो प्लॉट वाला फिर से रन करती हूँ. गलत नहीं होगा. The only thing is that when you use lines function, and the difference between AB line and lines function is that in case of lines function, you don't see that the line exactly, goes from ekdam end to end. But when you use AB line now, it goes from end to end because AB line का function ही होता है intercept slope line बोलते हैं. AB line का मतलब A is intercept, B is the slope. Intercept slope line होता है. तो उसका यूज ही ये है कि इट्स फॉर द ट्रेंड लाइन बनाने के लिए, रिग्रेशन लाइन बनाने के लिए. उसका यूज ही इस चीज के लिए होता है. ठीक है. ओके मैम. तो इसीलिए इट्स बेटर. बट यस, लाइंस फंक्शन विल आल्सो गिव यू द मार्क्स. Next is state the proportion of the total variability of the responses explained by the model based on your output in part 7. क्या होगा? Based on your output in part 7, what is the total variability explained by the model? बताना बताना बताना.
Meghna is saying it is SS regression. SS regression तो है, बट इससे कैसे निकालेंगे? कौन सा पार्ट है? इजी है. It is the R square. It is the R square. आप क्यों करोगे SS regression by SS total? अनोवा, इसमें क्लियरली बोला है from the R output above the proportion of total variability explained is 74.24%. R square वाला वैल्यू आप निकालो, एक्सट्रैक्ट करो. Summary of model $R. देखते हैं इससे आते क्या. नहीं, not sure. मुझे याद नहीं आ रहा कि $S1 R square स्मॉल r था. R square है ना? ठीक है. Next part, plot a graph of the residuals of the model fitted in part 7 against the explanatory. So on the x-axis you have the explanatory variable, which is the alcohol. On the y-axis you have the residuals. ठीक है? तो आ जाओ. क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? Plot x-axis पे we will have what? Alcohol 2. On the y-axis you will have, on the x-axis you have the explanatory variable. On the y-axis you have the residuals. ठीक है? Of the model. ठीक है? Please give a nice title. You will say that residuals of the model, and you can write Greece and USA omitted in the bracket if you want to. X-axis is alcohol per adult per year. Bracket में liters लिख देना. Bilab will be your residuals. ठीक है? I am not writing all those. You have to fill in. तो ये हो गया आपका residuals का plot. Then comment on the validity based on the output in part 9. So इसमें आपको बताना है using by seeing the model whether you feel model is good or not. So सबसे पहला क्या होता है? Can anyone tell me? सबसे पहले तो the errors should be randomly it should be random. There should not be any pattern. So we see all the residuals are close to 0, which is fine कि residuals छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े residuals नहीं है. We see it's random, but one thing that we can clearly see, as your x increases, the residuals are also increasing, which can suggest that the variance of the model is increasing. आप एक चीज और कर सकते हो. प्लॉट 1 करके देखते हैं. तो इसमें फिटेड वैल्यूज which is y values के अगेंस्ट पे आपका रेसिडुअल्स आता है. 2 करके देखो. 2 से थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स नहीं आएगा. 3 से आता नहीं आएगा इस x वैल्यू के अगेंस्ट पे. नहीं है. चलो
कोई बात नहीं. So one thing that we can clearly see is that as your x values are increasing, the residuals which are initially close to zero, but now it's going apart. So it means that the variance is actually not consistent. It's not constant. Variance has to be constant. For the residuals, the variance is not consistent. It's increasing. Because जो आपके residuals है वो far apart जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं zero से. So variance is increasing with increase in the x value. So this may suggest that the model is not very much appropriate. This linear model is not very much appropriate for the data which is provided to us. ठीक है? The errors are very close to zero. So mean of the errors is zero. क्योंकि question में बहुत clearly एक चीज और mentioned है that we are assuming that it follows normal 0, sigma square. So mean seems to be zero. क्योंकि आप एवरेज निकालोगे वो तो जीरो के अराउंड स्कैटर्ड है, वो जीरो आएगा, बट वेरिएंस आपको कांस्टेंट नहीं निकलेगा. सो दैट यू नीड टू मेंशन. चलिए और देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, उसको कंप्लीट करो. कमेंटिंग इज ऑफ 3 मार्क्स, तो उसको पूरा अच्छे से कमेंट को लिखो. एक बार हो जाए तो सब लोग चैट बॉक्स में डन लिखना. मैम यहाँ पे we have to mention right कि because it seems that variance of residuals is not constant, the model may need improvement क्योंकि वो लोग validity पूछ रहे हैं. मॉडल में नीड इम्प्रूवमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ मॉडल इम्प्रूव कैसे करोगे, आपका मॉडल ही करेक्ट नहीं है. सो इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है जब आप लीनियर मॉडल कर रहे हो, मल्टीपल वेरिएबल्स आपके हैं, तो आप मे बी कोई वेरिएबल ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट यू विल मेंशन द मॉडल इज नॉट अप्रोप्रिएट. इम्प्रूवमेंट वाला रॉन्ग रहेगा. गॉट इट? Yes, ma'am. Thank you.
हो जाए तो सब लोग डन लिखो. Chalo, next question. Next, we will not do this third question. ये थोड़ा यहाँ पे ना पेस्ट करने में ऊपर नीचे हो गया. Third and fourth question अभी नहीं करते हैं. Let's start with the fifth question first, and then we will come back to the third and fourth question after the break. ठीक है? आ जाओ. चलो. So a machine in a sweet factory fills bags of sweets to weigh 500 grams. The actual weight of the sweet bags is known to follow normal distribution. The sweet manufacturer believes that the machine is underfilling the sweet bags. A sample of 10 sweet bags is taken and weighed as summarized below. तो ये आपको weights दिए हुए हैं for the different bags which are there. The data can be entered into R using the following code. Perform a suitable t-test to determine whether the sweet bags are being consistently underfilled. Stating the 1 second. ठीक है. हाँ. So a sample of 10 sweet bags is taken and weighed as summarized below. The data can be entered. ये आपको enter करना है data इस पे. Perform a suitable t-test to determine whether the sweet bags are being consistently underfilled, stating the hypothesis and the level of significance used. तो easy है, not difficult, कर सकते हैं. सबसे पहले ये वाला कोड रन कर लो जो आपका वेट वाला है, इससे आपके वैल्यूज आ जाएंगे. The question is to test whether the sweet bags are consistently underfilled. And आपको बोला है that approximately they should weigh, आपको population mean दिया हुआ है 500. Do you have a standard deviation? No. So we cannot do the standard deviation test. It will be a t-test. And it will be a one-sided t-test. It will be a one-sided t-test because underfilled देखना है.
तो लेस देन टेस्ट होगा कि ग्रेटर देन टेस्ट होगा, बताना। लेस लेस Less देन than. टेस्ट होगा. And what function we will be using? T dot test. T dot test. ठीक है, म्यू आपको 500 दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है. चलो इसको रन करो. ये मैं कॉपी नहीं कर पाऊंगी, इसको आप लोग कर लो जल्दी से. इसको पूरा फटाफट कॉपी करो. आई एम नॉट डूइंग दिस. मैं एक बार डेटा यहाँ से ले लेती हूँ. देखो, आप लोग करो तब तक. ठीक है. T dot test. Those who don't remember can go and search on the help tab. अब ये क्या बोला है, आपको x का वैल्यू दे दिया है. Then in alternative we can write what? Less than test है. And also they've given us mu, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको चेक करना है. व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस इज द मीन वेट ऑफ द बैग, स्वीट बैग्स इज 500 grams. और आपको लिखना पड़ेगा. इफ यू आर नॉट राइटिंग इट, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. दिस इज ऑफ 8 मार्क्स. 3 मार्क्स का आपको लिखना है कि टी डॉट टेस्ट आपको रन करना है, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन 8 आप टी टेस्ट करोगे. Me, and then you give the null hypothesis equals to alternative hypothesis equals to mean weight of the sweet bags is less than 500 grams. पूरा लिखना है आपको. ठीक है. So run this. आपका टेस्ट रन हो गया है. Your p value is 0.15, meaning 15%, which is, तो आप बोलोगे the, and also they have mentioned you need to state the hypothesis and level of significance. So stating the hypothesis gives you 2 to 3 marks, and then level of significance also gives you 1 mark. So आप ऐसे बोल सकते हो that the test has been performed at 5% significance level. The p value of the test is 0.1574, suggesting that it's greater than 5%, which means that we have insufficient evidence to reject the null hypothesis, and it means that the mean of the sweet bag is actually equal to 500 grams. Propose an interpretation. So अभी interpretation यहाँ पे क्या होगा कि
आप ये बोल सकते हो, since we are not rejecting the null hypothesis, the mean is 500 grams, which is in favor. ठीक है, which is in favor of us, क्योंकि आप क्या करते हो, आप रैंडम चेक लगाते हो कि भाई आपने 10-15 बैग्स कलेक्ट किया एंड आपने एक रैंडम चेक लगाया वेदर whether whatever you are doing is correct or not. आप सबको बोल के दे रहे हो, आप 500 ग्राम्स दे रहे हो, बट एक्चुअल में 500 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होने से इट्स फाइन, बट कम नहीं होना चाहिए, राइट? सो वो आपका यहाँ पे जो सिचुएशन है वो नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे कि वी हैव इनसफिशिएंट एविडेंस दैट द बैग्स आर बीइंग अनफिल्ड, बिकॉज आपका टेस्ट वही है, मैन्युफैक्चरर को वही चेक करना था कि अंडर फिलिंग तो नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे वी हैव इनसफिशिएंट एविडेंस टू से दैट द स्वीट बैग्स आर बीइंग अंडरफिल्ड। ठीक है, ये मेरा डेटा आई थिंक थोड़ा गलत हो गया, इसीलिए ऐसा हो रहा है इधर पे। हाँ, इट्स द सेम थिंग, अभी भी 0.287 है, व्हिच इज ग्रेटर देन 5%। इसको कंप्लीट करो, देन टेक अ 5 minutes break and then we will start with the next question. ठीक है, I'll let you all know, just give me 2 minutes कि कितने बजे exactly class start होगा, तब तक के लिए with proper comments, null hypothesis, alternative hypothesis, पूरा इसको finish करो, level of significance।
ठीक है, लेट्स टेक अ 5 minutes क्विक ब्रेक. वी विल रिज्यूम एट 10 minutes ब्रेक लेते हैं, 1:10 पे रिज्यूम करेंगे. ठीक है, चलो.